Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. So this is one of our interactive editions of Market Mantra. But do remember that we don't address company-specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2371-7106 and 2342-1050. My name is V. Ravi Kumar and with me is my Hindi co-anchor Vibhuti Mishra. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। आज हम ताजा आर्थिक खबरें आप तक लाएंगे। आज सोमवार है और हम आपके सवाल भी सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ बता दें कि कार्यक्रम में किसी कंपनी विशेष या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। हमारे 3 टेलीफोन नंबर्स हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23421050। इस पे आप फोन करके आप सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 अवश्य डायल करें। सवालों के जवाब देने और चर्चा के स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार उदयन रे। उदयन जी नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार और धन्यवाद। सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं वी रवि कुमार। Agriculture Infrastructure Fund crosses 30,000 crore rupees mark. Domestic stocks witness gains of 0.5%. Sensex finishes near the 60,950 points mark and Nifty settles above the 18,100 level. And Brent crude rises above $88 per barrel. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने किया 30,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार। घरेलू शेयरों में आधे फीसद की तेजी। सेंसेक्स 60,950 अंकों के करीब बंद। निफ्टी 18,100 स्तर के ऊपर बंद और ब्रेंट क्रूड में प्रति बैरल $88 के ऊपर तेजी। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर एआईएफ की, जो आज एक अच्छी खबर यह है कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार एआईएफ यानी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने कृषि बुनियादी ढांचा क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए 30,000 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने का आंकड़ा पार कर लिया है। मंत्रालय ने कहा है कि एआईएफ ब्याज सहायता का 3% 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए ऋण गारंटी सहायता और अन्य सुविधाएं प्रदान करके किसानों और कृषि उद्यमियों को चौतरफा वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड 8 जुलाई 2020 को शुरू की गई एक वित्त पोषण सुविधा है। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2025-26 तक 1 लाख करोड़ रुपए वितरित किए जाने हैं और 2032-33 तक ब्याज सहायता और क्रेडिट गारंटी सहायता भी दी जानी है। And meanwhile, our first caller for this edition is online with us. Ronak Jain from Lalitpur is online. Ronak, welcome to Market Mantra. Please ask your question. नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर, मैं कैसे पता करूं कि मेरे लिए कौन सा टैक्स स्लैब बेटर होगा, नया वाला या पुराना वाला? मैं एक नौकरी पेशा व्यक्ति हूं और मेरी तनख्वाह लगभग 12 लाख रुपए। मैं एटीसी में 1.5 लाख रुपए भी इन्वेस्ट करता हूं और लेकिन और कुछ अदर डिडक्शन नहीं है अभी तो नहीं, लेकिन 2-3 साल में मैं होम लोन लेने के बारे में सोचूंगा। His question is that how does he determine should he take the new tax regime, which was the nudge regime that the government had introduced a couple of years ago, where no exemptions were available but a lower tax rate, or should he go for the older regime where he gets all those exemptions under ATC, ATD, but he gets a higher tax rate? So which one should he choose? And he has a annual income of around 12 lakhs and he invests 1.5 lakhs in ATC. And he's planning to take a home loan so that Section 24 will also apply in case that is available after 2 years. So, इस केस में अभी रवि आने वाले बजट में उम्मीद की जा रही कि कुछ शायद बदलाव आए।
तो निर्णय लेने से पहले ये बदली हुई परिस्थिति को देखना पड़ेगा। अगर कोई बजट प्रस्ताव आते हैं जिसमें उसको आकर्षक नए जो योजना थी उसको आकर्षक बनाने के बारे में बात की जा रही थी कि उसको क्या उसको आकर्षक किया जाएगा, या जो एग्जेम्पशन वाली जो सिस्टम थी, प्रणाली थी, उसमें कुछ टाइटनिंग की जाएगी जिससे नया वाला स्कीम योजना जो है वो आकर्षक हो जाए। तो ये देखना पड़ेगा। अगर जो पहले से निवेश कर रहे हैं टैक्स सेविंग, तो उनके लिए शायद उनके लिए अभी जो चल रहा है शायद वो बेहतर है, जो काफी सालों तक कर चुके। मान लीजिए आप ऐसी कोई स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं जिसमें आप टैक्स सेविंग निवेश के साथ कुछ चीज और की कॉम्बिनेशन करते हैं, इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस का प्रीमियम जा रहा है वहां पे और वहीं से आप टैक्स सेविंग निकालते हैं, फिर तो शायद बने रहना बेहतर है अभी का जो सिस्टम है। बट इज देयर एनी वेबसाइट जहां पे वो देख सकें कि इसमें कितना आएगा और इसमें कितना आएगा? मेरे ख्याल से इससे बेहतर तो ये है कि आप किसी टैक्स विशेषज्ञ के पास जाएं और एक कंपैरिजन करा लीजिए। एक बार का सिस्टम है और फिर आप बिल्कुल निश्चिंत होकर कर सकते हैं। पर इसके साथ इम्पोर्टेंट, अगर आप मेरे से सही में पूछें, जो अपने करियर में अपने वर्क लाइफ में शुरुआती दौर में है, बेहतर तो ये है कि नया वाला जो रेजीम वो बेहतर है, क्योंकि निवेश तो आप देखिए आपको करना ही है, लाइफ इंश्योरेंस आपको लेना ही है, तो वो उसके साथ कर बचत के साथ जोड़ना, वो तो ये तब की बात है। एक अलग जमाने के बारे में बात हो रही जब भारत में लोग बचत उतनी नहीं करते थे, निवेश उतनी नहीं करते थे, उनकी आय उतनी नहीं थी। आप देखिए ना, सेक्शन 80C का जो ये लिमिट है ये बना कब था? 2005 और आज है 2023। सो एक अरसा हो गया। जो उस वक्त जो 2005 में पैदा हुए होंगे वो आज 18 साल के हो गए होंगे। तो ये काफी वक्त गुजर चुका है। तो टैक्स की छूट पाने के लिए निवेश करने की आपको जरूरत नहीं है। आप दोनों को अलग रखें तो बेहतर है। पर अगर आप उस रास्ते में चले गए हैं तो फिर तो आपको प्लस माइनस देखना पड़ेगा कि कौन सा बेहतर है। इसी बीच हमारे साथ गाजियाबाद से प्रिय श्रोता हैं गौरव जी, अपना प्रश्न पूछिए आप। नमस्कार। गौरव, योर लाइन इज नॉट क्लियर, हम आपको क्लियरली नहीं सुन पा रहे हैं, तो हमारी ये रिक्वेस्ट होगी आपसे कि आप दोबारा ट्राई करें ताकि हम आपकी आवाज क्लियरली सुन पाएं। वी हैव मीनवाइल जितेंद्र फ्रॉम जयपुर ऑन लाइन विद अस। जितेंद्र, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हाँ, हेलो। जितेंद्र जी, एक बार दोबारा आराम से बोलेंगे, आपका सवाल क्या है? डिफेंस सेक्टर में कितनी कंपनियां, कैसे पता करें? ये पूछ रहे हैं कि डिफेंस सेक्टर में कितनी कंपनियां हैं, नाम कैसे पता करें? देखिए, आप अगर इसमें गूगल महाशय आपके स्मार्टफोन में अगर आप डिफेंस सेक्टर स्टॉक्स करेंगे तो आपको आराम से मिल जाएंगे। और कुछ काफी कामयाब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनी इसमें गई हैं, कुछ आपकी ऑटो क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां इसमें गई हैं। तो कई बार क्या हो रहा है, डिफेंस का जो काम है वो ऑटो हो सकता है, ऑटो क्षेत्र के ही कंपनियां कर रही हों एक सेक्शन में। तो आप अगर डिफेंस सेक्टर स्टॉक्स PDF या उस टाइप का सर्च करें तो आपको उसके रिपोर्ट्स मिल जाएंगे और रिपोर्ट्स आप पढ़ सकते हैं। आप डिफेंस सेक्टर स्टॉक्स करके देखें, डिफेंस सेक्टर करके देखें तो आपको वो कंपनियां मिल जाएंगी। अब सवाल है कि आप उसको डिफेंस सेक्टर में क्या क्या जोड़ते हैं। क्या शिपयार्ड को भी आप जोड़ेंगे? दूसरी चीजें हैं उसके जो एंसिलरी होती है, मान लीजिए कुछ पावरिंग सिस्टम बनता है, बैटरीज बनती है मान लीजिए मिसाइलों के लिए, क्या उसको भी आप इंक्लूड करते हैं? तो काफी कुछ आपके डेफिनेशन पे डिपेंड करता है। पर जो कामयाब हुए हैं कंपनियां, वो आप जैसे कल्याणी ग्रुप के हैं, फिर आपके L&T के हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा। ये जो इन्होंने जो गाड़ियां बनाई हैं, फिर दूसरी चीजें बना रही है, तो ये कामयाब हुए, इनको डिफेंस के ऑर्डर्स मिल रहे हैं। फिर कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स भी हैं जो लिस्टेड हैं, तो उनको भी आपको देखना पड़ेगा। जो एविएशन में है उनकी तरफ भी आप देख सकते हैं। पर जहां पे भी
डिफेंस सेक्टर में याद रहे सरकारी दखल रहता है, सरकारी पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड होता है, ऑर्डर्स बल्कि होते हैं, तो आपको उसको जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में आप करते हैं, जैसे प्रोजेक्ट पाइपलाइन देखते हैं, उस हिसाब से आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी। ये एफएमसीजी की तरह या आईटी कंपनी की तरह नहीं है। प्रोडक्ट पाइपलाइन और प्रोजेक्ट पाइपलाइन और कब रियलाइजेशन होगा, ये कुछ चीजें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी। इसी बीच कोलकाता से हमारे नियमित श्रोता हैं अतानु साहा। अतानु साहा जी नमस्कार, अपना प्रश्न पूछिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग टू गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। I do listen Market Mantra through news on air.nic.in regularly. My question is, sir, what is PPP model and what is equity growth? And sorry, do PPP model influence equity growth to development? Thank you, sir. Okay, his question is about the public-private partnership model. And so, in a very broad sweep, since we'll be very short on time, but typically when PPP model typically comes when the government cannot be participating in all kinds of activities. Sometimes government wants to start it and wants to put in some money, or it can have any particular role. It can give the resources, it can be a part owner, and what can happen is the private player, it can invite a private player to participate. Typically PPP would be in a high investment ticket area where a private sector on its own will not take an initiative. So the government has to make a beginning. The existing market or existing infrastructure or existing institutions are not there. So it could be something like an airport, it could be like a port, it could be anything. It could be a road. Okay, so where you need a large amount of investments to begin with, government has to participate. It has to be under the plan. That's when a private sector player will come, and the private sector will come and unlock. It'll come and participate, and you're trying to create a market. You're trying to create an infrastructure, physical, or it could be a digital infrastructure, and then basically what you're trying to do, the risk of making the investment is actually shared, and then according to the terms of this partnership, the revenue can be shared, the asset can be transferred back to the government, or it could go on further. So there could be lots of variations. Now the interesting part about such projects is that the way you finance it, because typically what happens, Ravi, we typically will go to the stock market, raise some funds, or a private equity and raise some funds, and maybe take some bank loans. Now these kind of projects typically are slightly longer term. You start earning revenues a little distance down the line. So typically what you need reasonably evolved debt structures. So it will not be a standard bank loan, because a bank will be overexposed. So typically you would have some kind of bond, some kind of loan syndication. You'll probably borrow from abroad. So it will be a complex structure, and it obviously it will have an equity component. But typically, I would imagine that it will have a slightly larger debt component than an equity component. I think we have Gaurav from Ghaziabad back online. Hopefully, a clearer line. Gaurav, welcome to Market Mantra once again. Good evening, sir. Good evening. And thank you to all the anchors to invite Udayan for this question answer session, because he rarely visits and he has very good insight, and I'm very impressed with his program. Thank you, sir. Sir, my question is about bank performance have been very good, private banks, and our GST collection is also rising. So in that context, even if the international recession looms in Europe and America, that will lessen demand of oil there, and we should get cheaper oil. So why are we getting higher fiscal deficit figures? And in that context, shouldn't be why are the foreign investors are pulling out, despite India being the sweet spot, India being the consumption economy, and India is the only growing place. Why are they pulling out, and how do you recommend a small investor like us to behave in this situation? Thank you.
So, one of the reasons, Ravi, and to the esteemed Gaurav, this is my understanding and I'm sharing my perspective. So, the fiscal deficit issue is simply because what has happened in the past. We had 2 years of really trying pandemic situation where the government had to support. There was no other choice. And in various ways government supported, and they said, okay, we'll let the fiscal prudence be on the side little bit, not too much. It never, to the credit of this government, and I think most people would agree, that they didn't go helter-skelter, they didn't throw fiscal prudence under the bus. Yes, they kept that in mind. So what has happened is now that emergency has gone away, or it's subsiding, you need to get things back on track. The right-hand side has to balance with the left-hand side, or the left-hand side has to balance with the right. What you earn, you have to spend. If you don't do that, people will not have confidence in you. Okay? So that's how you're having to tighten it, right? Now, fiscal deficit is not the only reason why institutional investors may withdraw. They come back, they withdraw, they come back. It's a tactical thing. So that is not an issue. We have, fortunately, people like Gaurav and others, they have been investing in the markets. So you'll see, while, say, in the US and other places, some markets have gone down by 20% annually, 30%. So they're using the words recession. But whereas in our markets, we just gained like a couple of 100 points today, if I'm not wrong. So that is not a problem. As far as banks are concerned, and that's where I think I'll wrap up this answer. They are in a pretty sweet spot at the moment, Ravi, because they have cleaned up their financials. If you see some of the results that have come out today, they're very interesting. You're provisioning far less, bad loans, bad surprises, nasty surprises. They are not, nobody's expecting that to come in. Only challenge with not only banks, even non-banking financial companies, NBFCs, they are also expected to do well. So the host of results that we'll see this week and later, you'll find that happening. So it's not a bad time to look at some of these hammered banks and hammered NBFCs. The challenge, Ravi, would be for banks would be to garner deposits, because they had got used to that paying less for deposit rates. Interests have gone up. They have to rework that. You cannot rework it overnight. You have to rework it. That is what's going to be the challenge, because that is going to, what is the spread that you'll enjoy? You're lending to a person at a certain rate, or an institution at a certain rate, and you're raising the money at a certain interest rate. Now that's fun that they had is going to lessen down a little bit. So you'll be seeing that figure coming in. Some people are that net whatever margin you have, you would see them very healthy. That possibly is going to be under pressure. But one of the reasons that market continues to do well, the indices, is because these guys are doing well. अगले कॉलर हैं बंगलौर से श्री एनआर प्रसाद जी, अपना प्रश्न पूछिए. हेलो जी हाँ, अपना प्रश्न रखिए. एनआर प्रसाद फ्रॉम बैंगलोर. Good evening. Two questions. First one is less than 10 days to go, what we can expect from the budget for the stock market? Something like corporate tax or reduction in the commission, what we can expect. Second question is, I know this semiconductor is being manufactured in India. It's going to be a part of the Make in India mission. Can we invest, as a retail investor, can we invest in these companies? So, Ravi, to that, I would say that if you ask me honestly, one should not have very, very high expectations from this budget. Of course, there's going to be, the budget proposals are never for just 365 days. Most of the time, if you're building infrastructure, you're not keeping in mind just 365 days. You're looking at 5-10 years. So expect that. Expect proposals that will be for the next 5 years, 10 years. It will be very infrastructure-led. That's what I think. Because that is the only way you can, get people to get interested and
private sector starting to invest at some point. It's probably not doing as much at the moment, so you want to kickstart that. So you can expect a lot of focus on infrastructure. You can expect something on the new, first question that we talked about, the new tax and the old tax regime, if I were to call it, or the how you calculate your tax. You can expect something out there. People are wishing something might happen in capital gains tax. I'm not very sure about it. These are the two things one can absolutely expect. Expect a very, very restrained budget. It will try to go towards fiscal prudence, and it will try to show that the government is trying to get back. That's the best way of attracting foreign capital, right? Now the question of semiconductors, we are very early in that scheme of things. Right now, such companies, in India, we are just trying to do something out there. We are nowhere in the picture. It's looking interesting, exciting. China, Taiwan, and yeah. So if an investor like our esteemed listener and caller wants to invest, I would say that go for international sort of mutual funds. Okay, maybe with a theme like that, right? Or you can even invest in theme-based international funds which invest in countries which are specializing in this area. So if you think Taiwan, South Korea, an international fund which is focusing out there, that might be a much better idea. Even the US, either it's a theme or it's a geographical theme. It might be a far better idea right now to do that, rather than looking for somebody who's announcing that we're going to come up with a chip factory, this and that. That's something which is happening. But when you're investing, you want to see revenue visibility, profit visibility. It's too early. Next caller is from Faridabad. Raghunath is online with us. Raghunath, welcome to Market Mantra. Please ask your question. नमस्कार आकाशवाणी। नमस्कार जी, नमस्कार। मंत्रा को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सवाल पूछें जी। सर, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि मैं ITI नहीं भरता और ब्रांच बैंक में मुझे लोन नहीं दिया जाता। मेरे पास अपना खुद का एक बजट है 20 लाख रुपए। वो कहते हैं कि आप अपने ही FD के ऊपर लोन ले सकते हैं और उससे मुझे अपना एक फ्लैट बनाना है। तो ये बस बताइए जरा आप कि ये सही रहेगा कि मैं अपने ही FD पर लोन लूं, या मुझे लोन तो देते नहीं बैंक में, ITI नहीं भरता। नहीं रघुनाथ जी, आपके पास FD कितने की है? मेरे पास FD 25 लाख की है। और आपको पैसे की कितनी जरूरत है? मेरे को पैसे की जरूरत तो मुझे तो ज्यादा की है, पर मैं अपना एक साइकिल चलाना चाहता हूँ कि जो मेरी मार्केट चल जाए, जो एक बजट बन जाए, तो मैं उसके बाद उस फ्लैट से मैं इनकम सोर्स बना सकता हूँ। मैं मार्केट बनाना चाहता हूँ, मकान बनाना चाहता हूँ, उसमें मैं फ्लैट मार्केट के हिसाब से अपना बिजनेस बनाना चाहता हूँ। उससे मेरे को इनकम होगी, उसके बाद मुझे रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। एक बार मैं साइकिल मेरी चल जाए तो उसके बाद मुझे ITI भरने की जरूरत पड़ जाएगी, फिर मुझे लोन आराम से मिल जाएगा। ये मुझे बताइए कि ठीक रहेगा राय आपकी? अगर आप मुझसे पूछें तो आप दूसरों से भी राय ले सकते हैं। ये मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये काम अकेले करना चाहिए। आप किसी ऐसे फैमिली मेंबर, परिवार के सदस्य या कोई और के साथ आप मिलके करें जो रिटर्न भरते हैं, ठीक है, और जिनकी नियमित आय है। फिर वहां जाके दोनों के साथ मिलके, अगर वो महिला हैं तो और भी बेहतर होगा, वो नियमित आय जिनकी है, या नियमित आय जरूर नहीं है कि उनको सैलरी से मिले, नियमित आय उनको किसी निवेश से भी मिले। मान लीजिए पेंशन मिल रहा है या इंटरेस्ट मिल रहा है, रेगुलर कुछ चीजें हैं जो पक्का हिसाब किताब है, तो वो अगर आप कर लेते हैं तो आपकी जो दावेदारी होगी वो काफी बेहतर होगी, और आपको लोन का अमाउंट भी बेहतर मिलेगा, और आपकी जो लोन की शर्तें होंगी, जो मियाद होगी लोन की, और लोन के जो इंटरेस्ट रेट वगैरह होगा वो भी होगा। देखिए, सिर्फ ITR भरने की वजह से भी नहीं, सिर्फ वो नहीं हो रहा। जब लोन दिया जाता है तो जो वित्तीय संस्थान है वो देखता है कि आप कैसे उस लोन को चुकाएंगे।
तो अगर आप एफडी के अगेंस्ट लोन लेते हैं तो मान लीजिए 90%, इस यहाँ पे 20 लाख है तो उसके जो 90% है वहां तक आपको लोन मिलेगा और उससे खैर आपकी शायद बात ना बन पाए, क्योंकि एफडी का जो लोन की जो मियाद होती है और घर के लिए जो पीरियड है वो मैच नहीं करते हैं। आपको एफडी अगर 2 साल की भी है, 2 साल के अंदर आपको वो लोन चुकाना पड़ेगा, नहीं तो आपके सारे एफडी का जो प्रोसीड है वो चला जाएगा। तो बेहतर ये है आप किसी और के साथ टीम अप कीजिए, परिवार, एक्सटेंडेड जो परिवार है, और बैंक से आप पूछ सकते हैं जिनकी शर्तें बेहतर है। एनबीएफसीज हैं, फाइनेंस कंपनीज हैं जो रेगुलर नामी फाइनेंस कंपनीज हैं और जिनके इंटरेस्ट रेट ठीक ठाक है, उनके साथ मिलकर अगर आप करें तो मुझे लगता है शायद आपकी जो दावेदारी है, मतलब जो कैंडिडेसी एज ए लोन कैंडिडेट, वो शायद बेहतर हो जाए। जी, अभिषेक दिल्ली से हमारे श्रोता हैं। अभिषेक, ये सवाल पूछिए। हाय, हेलो जी, नमस्कार। Namaskar. Good evening, sir. Good evening, host. Good evening, everyone. So my question is, if I'm new to stock market and I want to invest rupees 10,000, so where would you recommend? It should be ETF, mutual fund, or any other option suggested by you? 10,000 every month or 10,000 one time? I think we lost him, so let's assume it's 10,000 every month because 10,000 one time makes sense. Right. So if he's actually almost there. So he probably has to look at either an ETF, exchange traded fund, if he has got a demat account, or if he is a lazy person like me, he goes for an index fund and does a systematic investment plan, SIP. Let's quickly look at some of the stories that we're covering to provide professional support to SC/ST entrepreneurs and thus promote inclusive growth. Union MSME Minister Narayan Rane inaugurated a day-long National SC/ST Hub Conclave in Mumbai today. The National Conclave has been organized by the Union Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises to spread awareness of the National SC/ST Hub and other schemes of the MSME Ministry. और सेंसेक्स और निफ्टी में आज आधे % की बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 60,950 अंकों के करीब रहा, जबकि निफ्टी 18,100 स्तर के ऊपर बंद हुआ। दोनों में वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुझानों के कारण तेजी रही। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 320 अंक की बढ़त के साथ 60,942 पर बंद हुआ। बीएसई के व्यापक बाजार में मिड कैप सूचकांक में 0.44% की बढ़त और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.30% की गिरावट दर्ज हुई। The Sensex climbed 320 points to finish at 60,942 and the Nifty 50 also rose 91 points to settle at 18,119. Vibhuti, let's look at the Asian market now. जी हाँ, एशियाई शेयर आज बढ़त के साथ बंद हुए। हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक 1.8%, जापान का निक्केई सूचकांक 1.3% और चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.8% चढ़ा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक 0.6% और सिंगापुर का स्ट्रेस टाइम्स 0.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपीय शेयरों में दिन के कारोबार में तेजी रही। पाउंड स्टर्लिंग आज आर्थिक आंकड़ों द्वारा समर्थित डॉलर के मुकाबले 7 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो दिखाता है कि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था आशंका से बेहतर कर रही थी और इससे अधिक ब्याज दर में वृद्धि की उम्मीद भी बढ़ गई। अंतिम समाचार मिलने तक लंदन के फुट्सी में 0.3% की बढ़त, जबकि फ्रांस का कैक और जर्मनी का डेक्स 0.1% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। If you look at oil prices, Brent crude was trading at $88.35 per barrel, while WTI crude price was at $82.25 per barrel. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी और मंद के लिए सोने की कीमत में आज 85 रुपए की तेजी आई। सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 56,745 रुपए पर चल रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक चांदी मार्च अनुबंधों के लिए 70 रुपये सस्ती होकर 68,470 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में गिरावट के साथ सोने का भाव $1,944.50 प्रति औंस रह गया। दिन के कारोबार में चांदी भी $23.90 प्रति औंस पर रही। Quickly, brief comment to then, what do you expect in the budget? Somebody else also asked, 10 days left. Quickly, briefly. Expect a very, very mellowed down, prudent sort of budget. You won't find populist schemes at all. It's going to be fairly balanced and forward-looking. That's all that we have in this edition of Market Mantra. Udayan, thank you so much for joining us live in the studio and answering the questions of all our listeners. Before we close this edition, a reminder of the headlines. Agriculture Infrastructure Fund crosses 30,000 crore rupees mark. Domestic stocks witness gains of 0.5%. Sensex finishes near the 60,950 points mark. Nifty settles above the 18,100 level. And Brent crude rises above $88 per barrel. That's all that we have in this edition of Market Mantra. Namaskar. Namaskar. Market Mantra.
Market Mantra.